Good morning, everyone. Hello and welcome to StudyIQ YouTube session. जोड़ी कि हमारा परिपूर्ण YouTube session चलता है, right? Welcome everyone to the morning session. And in the today's session, हमें discuss करें MCQ, right? जोड़ा कि based on science and technology. तो जो हमारा रहिबो आजिर session रहिबो science and technology ऊपर रहिबो. Good morning, Rani, Sasmita, Afrin, and Sunita. Right? Very good morning to all of you joining the session. चलो फिर session को मैं start करिबा. Right. Obviously because of some workload देखी पारथो कि काली भी इवनिंग रे because of some extra curriculum जोगु topper stocks जोगु सेठी हम busy रही जाइथिली and that is why I could not take the class in the last class, so hence I will go through the today's session को मैं नेकी आगो को जिबा. Right. चलो फिर ताले आज हम MCQ जोटा रही छि आपनकर पेंडिंग काली रो एंड ताकू कंटिन्यू कर दबा जी. तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपनकर देखंतु स्क्रीन रे रही छि. होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. कि with respect to the India's supercomputing mission, which of the following is correct? First questions ajiro. With respect to supercomputer, see आज एथि पे मु 16 नंबर क्वेश्चन रो स्टार्ट करी छि कारण ऑलमोस्ट हमें जेतला हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जेतला करी थिले ऑलमोस्ट बहुत सारा क्वेश्चंस मु आगुरु करी सारी छि. लास्ट सेशन रे जो हमें 15टा ना 20टा क्वेश्चन डिस्कस करथले सेथरु यूपीएससी रे मध्ये रिपीट हेछि, मेंस रे मध्ये हमें क्वेश्चन देखि छै लास्ट टाइम. तनु क्वेश्चन तो आसु छै, एथरे किछि डाउट ही नहीं, राइट? एथे किछि डाउट ही नहीं, लास्ट टाइम में देखितले. तो नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द आंसर से कथा हम बहुत थोड़ा हमें डिस्कस करछे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द आंसर. तो आंसर को केमती आइडेंटिफाई करा जिवो साकू हमें बहुत थोड़ा डिस्कस करिछे, राइट? जेमते कि से होछि सुपर कंप्यूटिंग. तो सुपर कंप्यूटिंग को जते नै कि हम देखु छे इंडिया रे ना परम सिद्धि जोटा रही एआई, परम सिद्धि एआई विच इज वन ऑफ द टॉप रैंक सुपर कंप्यूटर्स जदि हम कह डेवलप्ड इन इंडिया. तो एटा को एटा डेवलप्ड इन इंडिया जदि हम कहबा दैट इज डेवलप्ड इन इंडिया. ये होछि दैट इज व्हाट जाको हम कहू छे सुपर कंप्यूटिंग जोटा हम कहू छे परम सिद्धि. दैट इज व्हाट परम सिद्धि जोटा हम कहू छे. The mission is jointly implemented by what ISRO and RB. ना RB से तो आर किसी ना बतावा नहीं. Primarily focus on the space research. ना हमें कोची सुपर कंप्यूटर फास्ट प्राइमरी फोकस कोची स्पेस. ना हमें सुपर कंप्यूटर को स्पेस मिशन रे यूज कर परियो, बट दिस इज नॉट प्राइमरी फोकस. दिस इज नॉट प्राइमरी फोकस. कंप्लीटली एक्सक्लूड फॉरेन कोलैबोरेशन, नो. सो दैट इज व्हाई सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर जति हम कहबा. तो ऑप्शन 1 कंप्लीटली ही परिबनी. तो ये जो एक्सट्रीम थाए ना ताको हमें अवॉइड करिया को पड़िबो. गुड मॉर्निंग सोनिता, शश्वत, सस्मिता, अफरीन. तो ये समस्त ए देइछंती, राइट? आप हमें आगु डिस्कस करथिले जोटा सेटा को देखि देबो, सेटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो. सी जो सेशनटा थिला साइंस टेक रो पूर्वरु जो 2-3टा लेसन मु नैछि याकू जदि मिसई देबो, मिसई कि जदि टुगेदर नोट बनै देबो, देन दैट विल हेल्प यू मैक्सिमम बेनिफिट्स देबे तुमको. गुड मॉर्निंग ऑल. देन आम कहबा अच्छा बाकी टिके आफरीन ग्रुप रे कहि दियो समस्त को जॉइन करे पे. द टर्म्स आईओटीज रेफर टू व्हाट? इजी क्वेश्चंस देखो, राइट? ये भी इजी क्वेश्चंस रही छी. बी 17 नंबर क्वेश्चन देखि दियो. दैट इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू व्हाट? आईओटीज जाको हम कहू छे इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू व्हाट? तो एथरे कहू छे मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द इंटरनेट यूजिंग द सैटेलाइट ओनली. ये नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट इज embedded with sensors and connectivity for the data exchange. आ कोन होची ना डेटा एक्सचेंज में रहउची, राइट? तो एटा हम कहबा दैट मींस देखो सपोज आम गोटे मोबाइल धरीचे, तो मोबाइलटा गोटे कौन आईओटीज अर्थात कौन से गोटे फिजिकल ऑब्जेक्ट जी कि
हार्डवेयर टा जे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करि पारथो बा इंटरनेट को कनेक्ट करथो बा इंटरनेट को यूज करि पारुथो दैट वुड बी द IoTs जा को हम कहबा दैट वुड बी कॉल्ड एज द IoTs सो सिंपल ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट हम कहबा ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट जेमति कि मोबाइल रे में बहुत सारा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अछि ये जेमति हम कहबी बोर्ड टा मु यूज करूची with sensors थाए connectivity for the data exchange हम कहि परथो that would be IoTs हम जाको कहूचे next so answer would be what B तो answer would be B answer मु शेयर कर दोची टेलीग्राम चैनल रे राइट सेठी शेयर हे जो डोंट वरी so it would be B so answer will be B next which of the following is are advantages of solid state batteries over the conventional lithium ion batteries ये टिका हट के अच्छी देखी दियो शाश्वत कौची 18D बाकी मैंने ट्राई करो बाकी मैंने ट्राई करा हाँ बहुत बढ़िया पहले जदि देखिबा देखो ये अप्लाइड क्वेश्चन दिस इज व्हाट ये होची अप्लाइड क्वेश्चन राइट दिस वन इज व्हाट अप्लाइड क्वेश्चंस ये होची कोन हमें अप्लाइड क्वेश्चन कहिबा एंड बिकॉज ऑफ व्हाट अप्लाइड क्वेश्चन ताले हम देखिबा डिफरेंस कोन देखो एनर्जी डेंसिटी हाई ही थाए जो हमरो सॉलिड थाए जोटा हमरो सॉलिड स्टेट ऑफ बैटरी जोटा थाए आर एनर्जी डेंसिटी अधिक थाए एंड दिस इज फास्ट चार्जिंग ही थाए ये कौन था ये जो सॉलिड स्टेट ऑफ बैटरी टा जो चार्जिंग ही थाए एटा मध्ये फास्ट चार्जिंग ही थाए चार्जिंग ता मध्ये फास्ट ही थाए आउ चार्जिंग रो जो टाइम टा जोटा मध्ये कम ही थाए तेनु एटा ऑल ऑफ द एबव एंड दैट इज बाय व्हाट ऑल ऑफ द एबव विल बी द आंसर तो एदा डी जदि मु देखिबी तो डी कोजी किए तमरो शाश्वत सस्मिता समीर अफरीन सोनीता रानी एवरीबॉडी इज गोइंग हाँ हाँ इवनिंग सेशन हबो इवनिंग सेशन विल बी देयर एडे तो काली रे पेंडिंग टा मु करूची इवनिंग विल बी देयर नेक्स्ट consider the following pairs of the defense technology of India Akash Pinaka Arjun फटाफट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 19 चलो चलो देखो 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 ट्राई करो डू इट देखिए आंसर कौन देलो 19 हाँ अर्जुन गोटे कौन अर्जुन टा टैंक इट्स ए व्हाट अर्जुन इज ए टैंक अफरीन कौन कहूँ अर्जुन इज ए टैंक इट्स नॉट बैलिस्टिक मिसाइल तो व्हाट अर्जुन इज ए व्हाट टैंक इट्स ए व्हाट टैंक इट्स ए टैंक तो अर्जुन टा जोटा रही तुमर इट्स ए टैंक राइट जेहेतु एटा गोटे टैंक जोटा हमें कहबा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम फॉर द Artemis right sorry it's a what tank not missile एक मिनट हाँ it's a tank तो अर्जुन होची कोना गोटे टैंक टा this one is a tank तो आंसर जो आफरीन कहूचो it's not a missile it's a tank शाश्वत भी कहूची it's a tank तो ये गोटे होची तमरो टैंक टा एंड बैलिस्टिक मिसाइल तो जानछो तमे केमथि जाई था राइट सपोज बैलिस्टिक मिसाइल बट ट्रैजेक्टरी पाथ रे जाई था से कोन थाए तार ट्रैजेक्टरी पाथ रे मूव कर थाए एंड बैलिस्टिक मिसाइल केम थाए सरफेस टू कोर थाए तमरो सरफेस टू सरफेस थाए बैलिस्टिक मिसाइल कोन सरफेस टू सरफेस को थाए एंड पिनाका मल्टी बैरल ये तो जानछे एंड आकाश तो जानछे दैट मींस सरफेस टू एयर इट वुड बी व्हाट
सरफेस टू एयर थाए सो दिस आर द तो जमती तुम अग्नि हो गला K9 हो गला सो दिस आर व्हाट बैलिस्टिक मिसाइल्स हम कहबा नॉट अर्जुन अर्जुन इज नॉट बैलिस्टिक मिसाइल तेणु करके दीटा ठीक हम ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट नॉट 3 ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट नॉट 3 only 2 options are correct not 3 correct Spandan also joining me then blue moon easy question देखो एटा करि परिबो समस्ते blue moon बाकी माने 20 number blue moon से कहछि ISRO's mission to establish the lunar base NASA's human landing system for the Artemis programs and blue moon mission जोटा रही then European Union ର space mission जोटा ଆମେ कहि परिबा और चाचा हाँ सोनिता कहछि B रानी is also going for the B yes so answer होछि कोन तो ये होछि आर्टेमिस मिशन ये होछि आंसर होइबो B so answer would be what B so answer would be B answer will be what B तो आंसर कोन रहिबो B रहिबो नासा ह्यूमन मिशन है ना 21 with reference to the DNA sequencing is it fine everyone NASA through DNA sequencing the term next generation sequencing refers to what next generation sequencing refers to what Twenty-one. Okay, done. Thank you, Rani. Shashwat Das कहछि okay answer देखिबा technique of sequencing DNA with radioactive isotopes नहीं एटा हबन एक मिनट just a minute गर्मी बहुत yes answer try करो समस्त बाकी समस्या try करो स्पंदन अरिका it will be what fast and high that is what throughout or I would say what that is the what throughput method of sequencing compared to the Sanger sequencing मु तुमको कही टेक्निक्स केमती AI देख AI यूज करि पारे न करि पारे दैट इज नॉट एन इशू सेटा में कहि परिबा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को आस
सैंगर सीक्वेंसिंग रे जो हमरो डीएनए पैटर्न टाकू करा जाय हैला डीएनए पैटर्न Question number 22. Which of the following is are correctly matched? Trojan horse, fishing तो जानिଛ देखो ये सब आजिकल फिशिंग वगैरह होनी कि साइबर तुम नहीं जो कॉपी करी हम्म 3 is incorrect. Afrin coach 3 is incorrect. Why 3 is incorrect? Because this is not software. ये गोटे malware. It's a what? Malware. तो ये जो ट्रोजन टा ना it's a malware. It's not software. ये जो ट्रोजन हॉर्स टा कौन आको ट्रोजन हॉर्स भी कहती. It's a what? These trojans are malware. They are what? Malware. तमो PC रे से eject करेगी तो PC को डैमेज करिवे कि मार ransoms ये वगैरह करि परंती. It's a malware. So that is why ये जो ट्रोजन था it's not a software, it's a malware. Malicious program जोटा कि PC रे एंटर करेगी से तुमको कौन करिवे डिजिटल अरेस्ट भी करि पारे ना ता द्वारा तुमको कहबो एटा करो सेटा करो सेटा करो. देन शक्ति प्रोसेसर कौन नेक्स्ट शक्ति प्रोसेसर ट्वेंटी थ्री ए कोची अफ्रीन समीर कोची ए सस्मिता ए सोनीता स्पंदन एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ए बहुत बढ़िया. इट्स ए व्हाट डेवलपिंग इंडिजिनियस माइक्रो प्रोसेसर्स फॉर द स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस. कहना आम जाचे जो चाइना ए डोमिनेट करके रखुची चाइना ताइवान ये माने सब डोमिनेट करके रखी आमर जो प्रोसेसर्स उपर माइक्रो प्रोसेसर्स उपर दैट इज व्हाई आम चाहूचे ए सेल्फ रिलायंट हवाई एंड शक्ति प्रोसेसर सेटा मन रखिबा दैट इज फॉर द डेवलपिंग इंडिजिनियस that is what microprocessor for the strategic and commercial application. Then metaverse आजकल बहुत न्यूज रे चलची metaverse 24 ट्राई कर ये भी देखो ये सब एथि आम जिते एमसीक्यू सॉल्व करो एबे बेटर दिस इज द टाइम एक्चुअली देखो यही टाइम रे ना तमे जिते एमसीक्यू सॉल्व करो सेते बेटर दैट विल गिव यू बेटर क्लैरिटी कि हाँ कौन को टाइप रो क्वेश्चन पचारुछंती राइट से जो क्लैरिटी हमको एठू मिलिबो बेटर मिलिबो क्लैरिटी राइट वी विल हैव बेटर क्लैरिटी ऑन दैट. ट्वेंटी फोर बी समस्ते कहते 24 बी ओके बहुत बढ़िया. तो मेटावर्स आम तो जाने दैट मीन्स 25 को जी आम 24 देखीदे इट्स अ फुली दैट इज इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड जोटा कि आम कह देख वर्चुअल वर्ल्ड जो तुम आसेट भी वर्चुअल एवरीथिंग इज वर्चुअल राइट एवरीथिंग इज वर्चुअल गोटे पैरेलल वर्ल्ड आम कहे इट्स अ व्हाट लाइक ए पैरेलल वर्ल्ड जेमिति भाव के जन पाखरे आसेट भी आम रोची घर ठू आरंभ कर एवरीथिंग पैरेलल वर्ल्ड पूरा आउ गोटे आम कही परिबा
राइट याकू वर्चुअल एनवायरनमेंट भी तुम कहि परबो इट्स अबाउट कंप्लीट वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हमें ताकू कहि परबो इट्स अ कंप्लीट वर्चुअल एनवायरनमेंट with reference to the renewable energy technology that is perovskite kite solar cell perovskite solar cell perovskite solar cell perovskite solar cell they are significant because what they use organic materials 100% efficiency na they are cheaper flexible and potentially more efficient than the traditional silicon based solar cell they work only under artificial light condition they have already replaced silicon solar cells in India solar park silicon तो सब यूज हो so answer would be what यदि आंसर देखिबा समस्त देई सारछ आंसर बहुत बढ़िया समस्त आंसर दैछ स्पंदन रानी सुनीता सस्मिता everybody is given right answer that is they are what cheaper flexible potential more efficient than the silicon based solar cell right तो that is the right answer केमती ना कि हमें completely silicon को बट जे तुम देखियो कि आधर क्वेश्चन मेंस रे आसबार चांसेस कोन के सोलार वेस्ट को मैनेजमेंट करियर अछि हेवी मेटल्स जो रिलीज हबो ताको हमें केमती कंटामिनेट करूची ये सब को हमको देखियार अछि 3D बायोप्रिंटिंग 3D बायोप्रिंटिंग बहुत बढ़िया एवरीवन बहुत बढ़िया आंसर दोछ त माने देखो बायोप्रिंटिंग अर्थात कौन जमती आम 3D प्रिंटिंग करुचे गोटे सपोज पेपर को आम पेंटिंग करुचे पेन को करुचे ये सब करुचे 3D प्रिंटिंग्स आम घर को करुचे ये सब करा 3D प्रिंटिंग्स करुचे आम सेमती जिते कर 3D प्रिंटिंग्स बायो अर्थात कौन बायोटिक कौन सी गोटे तुम सेल हो पारे सेटा गोटे डीएनए हो पारे कौन ऑर्गन हो पारे तो सेटा हो तुम दैट मीन्स व्हाट बायो मीन्स व्हाट कौन सेल हो पारे बायोमेटेरियल्स हो पारे राइट कौन सी ऑर्गन हो पारे टिश्यूज हो पारे so that will be there the printings of biological tissues organ using cells and biomaterial using what cells and biomaterials so that is the right answer B तो ये देखो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो गोटे बायो प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग करा जाउची लेट से जनकर लिवर केते डैमेज हेची कि कोन ताकू आमे कोन 3D प्रिंटिंग्स करके बायो प्रिंटिंग्स करके आनी परिबो ताकि तार कंप्लीट इमेज पूरा तुम देख पारो जोटा कि कहन कि वन काइंड ऑफ रियल इमेज राइट सो दैट इट वुड हेल्प यू इन मेडिकल्स बा हेल्थ केयर ये बहुत ही ज़्यादा माने रेवोल्यूशनरी थिंग्स आई वुड से it's about paradigm shift in the medical treatments across the world ame koi pariba so that is why that would be B is the right answer then we will comes to another topic that is what internet protocol version 6 IPv6 what IPv6 ये देखि दिया तमे आउ थरे मु कहिबी IPv6 IPv6 27 27 जदि देखबा समीर कहूची डी डी मध्य कहूची सोनिता आफरीन सी 1 and 3 कहूची स्पंदन कहूची सी
yes. तो right answer जदि कहबा अफ्रीन स्पंदन C 2 is incorrect, so it would be what? Yes, it backward compatible नहीं था, ये backward compatible से नहीं था, this is not backwards without any से कुछ transitions mechanism, बिल्कुल ये statement छूटा नहीं था, एटा without न था, that means एटा कोई no direct ही था, ये compatible with IPv4 सहित ही था, not directly backward न था. So 2 is incorrect. Then in the context of astronomy, the fast radio burst ham radio भी हमें यूज करू केबे केबे ham radio. Question number 28. Thank you. Chalo फिर 28. In the context of astronomy, fast radio burst pulse of radio waves of millisecond duration from the unknown, that is cosmic source, burst of radiations from the solar flares, signals that generated from deep space probes, artificial signals created by satellite. हाँ ट्राई करो देखिए. It would be what? 28 एक होची समझते तो प्राय ये दीचो. फ्रेंड्स अस्मिता समीर सोनीता दीप्ति स्पंदन सुनीता रानी, everybody is going for yes. Yes, the right answer is also pulses of radio waves of millisecond. जदि तुमको पचारिबो एथि गोटे आ गोटे क्वेश्चन कहूची सुनो. जदि लास्ट एबे पचारो तुमको के शुभ्रांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे थाई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सहित कथा होतला कोउथरे, तो सेटा कहबे हाम रेडियो. दैट इज व्हाट हाम रेडियो. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट हाम रेडियो रे से कथा होतले. तो सेटा को मध्य इंपोर्टेंस रही राइट. सेटा मध्य तुम इंपोर्टेंस रही जदि पचारो पुणी पचारो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट अच्छी लोअर ऑर्बिट अच्छी. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकिन पढ़ी जीव कहीं से को ऑर्बिट अच्छी केते मीटर पर सेकेंड केते स्पीड रे जाउची, अर्थर स्पीड ठू कम ना अधिक तार स्पीड. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रे गोटे दिन से केते थर अर्थ चारिपटे चक्कर लगाउची, ए सारा जिनस तुमको टिके देखीदेव कहीं एगुड़ा बेसिक जिनस गुड़ा तुमको पचारि पारे जेहेतु स्पेस स्टेशन को जाइए. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केबे हैला कौन हैला को कंट्रीज मैंने मिसिकी करथिले, सेतर चाइना अच्छी कि नाही ए डिटेल्स ताकू टिके पढ़िबो राइट. ता पूर्व आम कह राकेश शर्मा को टिके पढ़िबो जेहेतु राकेश शर्मा तांकर मेंटर कि मेंटर होचे राकेश शर्मा इज द मेंटर ऑफ शुभ्रांशु शुक्ला राइट. तो ताकू लिंक करी पढ़िदेव कि राकेश शर्मा केबे जाइथिले कोठू जाइथिले, जो हमर रशिया रु जाइथिले सेटा आमे जानिचे. ओके तो ताकू टिके तमने लिंक करके पढ़िबो. नाउ कम्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स मेन पर्पस ऑफ लेजर, दैट इज व्हाट इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना लीजा. Which of the following is the main purpose of laser, that is what interferometer space antenna. $29.
तो 29 जदि हम देखा डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स इन स्पेस, वाह बहुत बढ़िया, राइट आंसर, इट्स ए व्हाट, इट्स ए डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। अच्छा मते कहो ताले ग्रेविटेशनल वेव्स को जदि डिटेक्टिंग एटा स्पेस रे गला ताले ग्राउंड रे कोन अछि, इफ दिस इज स्पेस देन व्हाट वुड बी ग्राउंड, ताले ग्राउंड रे कोन अछि, हां ए जदि तमरो स्पेस पई गला देन व्हाट वुड बी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड रे हम कोन रखि छै ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करिया पई, एनीवन की कहि परिबा ग्राउंड रे कोन रखि छै हमें कोन अछि, व्हाट लिगो, इट्स ए व्हाट लिगो, तो ग्राउंड रे कोन अछि लिगो, कोठी अछि लुसियाना, लुसियाना यूएसए, इंडिया रे कोठी हबो महाराष्ट्र, राइट सेतले बहुत न्यूज रे थिला, बुझि परिबो ग्रेविटेशनल वेव्स तो जोटा तुमरो कोन थाए दिस दैट क्रिएट रिपल्स इन द स्पेस, स्पेस रे कोन करथा रिपल क्रिएट करे, इट विल रिपल्स इन द स्पेस, जेतरे दीटा तुमरो ब्लैक होल 1 and black hole 2 जेतरे मर्ज होई थाए, when the two black holes will merge. Next, consider the following statements regarding the high, that is hypersonic technology. Spandan kochi liko, right? Then comes to the consider the following. Consider the following statements regarding hypersonic technology. It refers to the vehicles system traveling at the speeds of greater than Mach 5. India has successfully tested hypersonic technology demonstrated vehicles HSTDV. जीव आंसर को जीवा, ओके देख 1 2 2 3 1 3 1 2 3, थर्टी, अच्छा देखो 1 2 2 3 1 3 2 3 4, it is refers to the vehicle system traveling at the speeds of greater than Mach 5. हाइपरसोनिक तो एटा कोहाई थला मैक 5 रो अधिक जो एक्चुअली सेटा मैक 4.5, तो एका कथा 5 नहीं जाओ ना। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल्स, इट इज प्राइमरली यूज्ड अंडर वाटर सबमरीन नेविगेशन, ये प्राइम अंडर वाटर केमती तमे हाइपरसोनिक यूज करिवो, हाइपरसोनिक तो अंडर वाटर हेले फ्रिक्शन रे स्पीड कमी जीवनी, एता तमरा एयर रे ही यूज हबो ना, तो अंडर वाटर केमती यूज करिवो तमे, अंडर वाटर तो केबे यूज हेई परिवो नहीं, एटा तो जहाँ भी हबो एयर रे हबो, तो 3 तो तुम गलत है गला 3, तो 1 2 वुड बी द आंसर, है ना, सेटा एटमॉस्फेयर हबो ना, वाटर केमथि हबो, वाटर तो ही परिबोनी, वाटर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव, देन डार्क मैटर, देन डार्क मैटर 31, डार्क मैटर,
Dark matter refers to what? Se koche matter made entirely of that is antimatter particles. Then hypothetically matter that does not emit or absorbs or electromagnetic radiation but exert gravitational effect. This is the correct answer. What? Yes, the B is the correct answer. जोटा हम देखि परिबा के सोनिता समीर आफरीन्स ये समस्ते देइचंती एंड बी इज द करेक्ट. तो देखा ब्लैक मैटर ना यूनिवर्स रे बहुत सारा अछि. ब्लैक मैटर्स आर सिंपल हाइपोथेटिकल्स. हमें एमिति किसी मैटर जोटा स्पेस रे अछि जे ना किसी ऑब्जर्व करिवो लाइट को ना एमिट करिवो बस ग्रेविटेशनल इफेक्ट को. जेमति हमें कहउते ना ब्लैक होल. ब्लैक होल टा कोन की लाइट तो सेठी एमिट होनी, लाइट को से ऑब्जर्व करूनी. तो ब्लैक होल्स मतलब ब्लैक होल मु कहूनी इट्स अ टाइप ऑफ दैट ब्लैक मैटर जोटा मु कहबे बट इट्स नॉट ब्लैक होल. तो ताकू बिल्कुल कंफ्यूज होबनी कि इट्स नॉट ब्लैक होल. अब ब्लैक मैटर तुमर बहुत अछि यूनिवर्स रे. हला डार्क मैटर होची यूनिवर्स रो जदि हम कहवा लगभग 27%. then 32 quantum dots, high efficiency solar cells, CRISPRs, gene editing বা gene editing যাহাକୁ କହୁଛେ ଆମେ, spintronics data storage device. 32 याକୁ ଆମେ ପଢିଛେ. we have gone through all these. तो हमारे क्वांटम डॉट्स आजिकल आम जिते एलईडी मोबाइल्स होगा लेट से आम ओलोएड कहचे एबे आगुर थिला एलईडी एबे ओलोएड. तो लेट से आम कहचे जिते आम आजिकल जो कॉस्टली टीवी आसूची मोबाइल आसी जाऊँगी ये सब जो स्क्रीन गुड़ा सब चेंज होगला राइट. एथरे कौन आम एबे क्वांटम डॉट्स को यूज करने लगुचे. क्वांटम डॉट्स हाई एफिशिएंसी बढ़ाए. क्वांटम डॉट्स यू कैन आल्सो यूज एवरीवेयर लाइक सोलार सेल रे मध्य में क्वांटम डॉट्स को अधिक एफिशिएंसी बढ़ाए. तो क्वांटम डॉट्स कौन एफिशिएंसी बढ़ाइबो. आउ ये तो कैस 9 आम पढ़ी आगुरी कैस 9 जहाँ को ये कौन क्रिस्पर बा कैस 9 जीन एडिटिंग आम पढ़ी पूर्व राइट. देन कवच सिस्टम ना सीटा ठीक अच्छे सी इज करेक्ट. तो स्पिंट्रोनिक्स डाटा स्टोरेज डिवाइस. कवच सिस्टम तो जानी समझते राइट. तो बहुत इजी समझते जानी चाहो. ठीक अच्छे. तो ये आम कौन ट्रेन कॉल्यूशन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी आम जाने हाँ कि नहीं केतल आसला जो महानगर ट्रेन एक्सीडेंट है तुम बालेश्वर से बहुत न्यूज रे थिला से बहुत न्यूज रे नथला कि महानगर जो जो एक्सीडेंट है. देन आसो तुम 34 which of the following statements about plasma gasification is correct. Plasma gasification is correct. नेक्स्ट नंबर देखो 34 हो बहुत बढ़िया. यस राइट आंसर जदि हम कहबा इट कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू एनर्जी यूजिंग हाई टेम्परेचर प्लाज्मा आर्क्स. हाई टेम्परेचर प्लाज्मा आर्क्स रे से यूज करंती. बहुत बढ़िया.
Next, solar radiation management technique कोथरे आसीबो बहुत इंपोर्टेंट ये क्लाइमेट चेंज पे यूज करि परिबो जना पड़ जाउछ आंसर करि परिबो इजीली है 35 राइट solar radiation management techniques is part of what? Okay, 35C. Okay, done. Right answer. So 35C पर हमें जीवा. So that means 35 तो हम देखी 35C हाँ इट्स ए जियो इंजीनियरिंग अर्थात कौन बुझी पारछ तो जियो इंजीनियरिंग कहले सिंपल जेमती हमर तमर जियो इंजीनियरिंग रे कौन कौन आसे प्लेसिंग द एठी मु टिके कहि देटा आजिकल इंटरव्यू चलची तो टिके व्यस्त रहया पडुची हैला पिलांको मैसेज आसुची जियो इंजीनियरिंग जेमती तमरो लेट्स से आमे कहबा मिरर प्लेसिंग देन क्लाउड जोटा हमर करछे कोन आर्टिफिशियल क्लाउड सेटा जो क्लाउड सीडिंग आमे करूचे that is also there cloud seeding then तो एटा क्लाउड सीडिंग भी आसी होची मिरर हे जिवो किंबा तमे एटा भी ऐड कर दो ये सब तुमर आसी ताकि ग्लोबल वार्मिंग को केमते में काउंटर करिवा टू काउंटर द ग्लोबल वार्मिंग द नेक्स्ट 36 36 next question 36 36 देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन मिशन हेलो ये जो से पिलाटा आसी देखो इंटरव्यू पई मुसी बस पूछे ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ବସେଇ ଦେବ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିକି
35 रो D all ओके C हबो ना 35 आंसर कौन देइछ तुम समझते C हबो 35 ना 35 C तो ठीक था ओ 36 की ओके 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 चलो फिर 37 ठीक अच्छे डन डन 37 ए भी पढ़ाई था बा इवेंट हरिजन पढ़े नहीं ब्लैक होल जो तुमको कहुई देख ये अच्छी आराम से ही पार इवेंट हरिजन कौन देख देख कही ना ब्लैक होल्स चारिपटे देखा जो इवेंट हरिजन द रीजन अराउंड द ब्लैक होल्स बियॉन्ड व्हिच नथिंग कैन एस्केप बस ब्राइट देखा जो इवेंट हरिजन रो पर जदि हम देखा साइड गुड़ा कौन जो तुम ये ब्लैक होल अच्छी मुझे देख ये ड्र कर दूँ फटाफट लेट्स से यहाँ हूँ गोटे ब्लैक होल्स तो ये मझीटा पूरा ब्लैक रहा पूरा ब्लैक राइट यहाँ पूरा ब्लैक এটা ब्लैक होल्स बट ये साइडटा जो ना এটা लाइट रहिबो ए साइडटा लाइट थाए एंड दिस इज इवेंट हरिजन एठो लाइटटा रिफ्लेक्ट हुए एठो राइट रिफ्लेक्ट हुए एंड दिस इज द कोर ऑफ एटा तार कोर एरिया जाको सिंगुलारिटी कहा जाए कौन कहा जाए सिंगुलारिटी बोली कहा जाए इनफिनाइट डेंसिटी मास ये सब आसीज देन कैटोसैट रिसैट एस्ट्रोसैट ये सब आम पढ़ी हाँ देख ब्लैक हरी आमको कही सैगिटेरियस 1 सैगिटेरियस 1 हूँ तुम ब्लैक होल सैगिटेरियस 1 which of the following pairs India satellites and purpose are correctly matched 38 38 है सैगिटेरियस 1 जोटा अच्छी आमर ब्लैक होलटा देखा एस्ट्रोसैट फॉर द एस्ट्रोनॉमी नॉट फॉर द वेदर राइट वेदर फॉर नहीं बाकी कार्टोसैट अब ऑब्जर्विंग से ठीक अच्छे रिसैट ठीक अच्छे जो एस्ट्रोसैटा रही दैट इज फॉर द व्हाट एस्ट्रोसैट इज फॉर एस्ट्रोनॉमी is for what astronomy for the space observation not for the weather बस तीन टा को गलत कर दिया for the astronomy right so that is why 3 will be wrong and 3 कौन हिजबो wrong हिजबो correct so 3 will be wrong now with reference to the blockchain application the smart contracts are what smart contracts are what smart contracts are what थर्टी नाइन फटाफट करो 39
39 B. Okay, right. It's a what? B. It's B. The right answer होची B. Correct. So that would be B. ठीक ଅଛି. Forty. Indus X. Which of the following primary objective of Indus X initiative launched by India and NASA? Is it for bilateral cooperation in nuclear energy, joint research and innovation in defense technology, and आम कह development of indigenous space rocket? कौन 40, yeah. Yes, it's about joint research and innovation in the defense technology. Joint research and innovation in defense technology. बहुत बढ़िया. Right. Then next time आसिबा. Consider the following statements about the semiconductor chips. They are primarily made of silicons. India currently has large scale commercial semiconductor fabrication plants. Semiconductors are critical for the electronics, telecoms and defense sector. ठीक है 41 1 and 3 what answer would you 1 and 3 so India has currently large scale नुह आमर तो ये स्टार्ट हो ना वी आर मतलब दिस इज अ सनराइज इंडस्ट्री दिस इज व्हाट सनराइज इंडस्ट्री दिस इज नॉट लार्ज स्केल वी आर इन ए सनराइज इंडस्ट्री हाँ चली बट लार्ज स्केल नुह जमी ओडिशा गुजरात स्टार्ट होती आसाम स्टार्ट होती ओडिशा गवर्नमेंट एबे इनिशिएटिव नहीं बट दिस इज नॉट लार्ज स्केल बट सनराइज इंडस्ट्री चली ब्रेक थ्रू इन that is the what start hot project aims at what this is what stars hot project what stars hot project aims at what 42 42 ट्राई कर हो sending micros that is what spacecraft to the alpha century using the laser propulsions तो आपको हम कहवा that is what A so A is the correct one A is the correct one in the context of medieval technology CAR T cell therapy medical technology CAR T cell therapy used for what this is very important ये last दी 3 वर्ष अछि CAR T ये बहुत important 43 और तुम्हें मेडिकल साइंस रे जानिबा कथा एटा is about immunotherapy for the treating of cancer
कैंसर रे ट्रीटिंग पे एटा इम्यूनोथेरापी टा एंड दिस इज इंपोर्टेंट राइट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल 44 1 3 and all 1 and 3 आ गोटे है तुमरो ऑल हाँ ऑप्शन 8 है सी दिस इज डी this is what D 44 they produce electricity by এটা তো আমি জানিছে না কোথরে হাইড্রোলিস আমি কোন কই আপনি ইলেক্ট্রোলাইজার্স ইউজ করা যায় আপনি কোন ইলেক্ট্রোলাইজার আমি ইউজ করি থাও ইলেক্ট্রোলিসিস হবো এটা কোন ইলেক্ট্রোলিসিস করাଯିवो is not it that will be there the only byproduct is water এটা কোন water হইবো combustion of hydrogen generate electricity this requires লিখাইছে না this required combustion of hydrogen to generate না না combustion of এটা fossil fuels হই পারে এটা কোন হই পারে তোমার fossil fuels হই পারে that could be sorry এটা তোমার কোন আমি কইবা fossil fuel হই পারে নালে RE হই পারে renewable energy नाले आरी रिन्यूएबल एनर्जी करिवो चलो नेक्स्ट 45 इसरो चंद्रयान 3 मिशन ऐते जानि जे इजी क्वेश्चन हो कोन नहीं की चलो फिर तो इजी क्वेश्चन दिया ही हो नेक्स्ट हमें देखा विथ रेफरेंस टू इंडिया स्पेस प्रोग्राम्स द मिशन शुक्रयान ये भी देखो इजी क्वेश्चन ए दीटा कर दो हमें 50 जाए जीवा 50 जाए जीवा हमें चलो फटाफट टिके कर दियो शुक्रयान 50 जाए में कर दो शुक्रयान तो हमें जानी ना कोठी जीवा विनस कोठी की विनस पई बस एटा विनस पई 47 क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एटा यूपीएससी पचार 47 क्वांटम की mathematical complexity of algorithm no India successfully tested quantum key distribution technology between two cities देखा 47 yes 1 and 3 done lucky mission of NASA then lucky mission of NASA explore Trojan asteroids of Jupiter lucky mission होची कोन B and एटा तो हमें पढ़ी थिले आगुरु 48B
49 ये भी बी राइट आंसर देइछो दिस इज आल्सो पी सस्मिता कोच बी दिस इज आल्सो करेक्ट चलो फिर है पृथ्वी शॉर्ट रेंज नो लॉन्ग रेंज ना बी आसीबो नाक तो आंटी टैंक नाकटा जोटा आंटी टैंक थाए तुमरो ए तो जानछे मैं 50 नंबरटा जोटा ओ एटा कैरियर नुहमो आर्यंत INS आर्यंत is not aircraft carrier, right? This is submarine. This is not aircraft carrier. This is also B. This is not aircraft carrier. This is submarine, nuclear submarine. এটা কোন nuclear powered submarine, not aircraft carrier. Not aircraft carrier. A aircraft carrier no, it's a submarine. Done. तो इवनिंग रे हमें डिस्कस करिया तो साइंस टेक एतिकी तम मनकर एनफ हे जिवो देखो साइंस टेक तम मनकर जेतिकी मु पठै दउची तमर व्हाट्सएप ग्रुप रे नले मो टेलीग्राम चैनल रे देई दउची देई देबी मु आउट टिप रे टिके एबे बिजी अछि देई देबी मु एथिरे कोन करबो साइंस टेक्नोलॉजी जो जेतिकी करा हि छै ना 3-4टा सेशन रे तमरो लास्ट and I think this would be sufficient to you apart from going through the paper. Let's say somebody has not gone through the papers of the last 6 months. If you have gone through these MCQs of the science and techs in the last 4-5, that means this is the 4th session of science and technology questions MCQ which is based on current affair and the different source ru ताको आनी की करा होची तेणु ये तमन को बिल्कुल हेल्प करिवो जॉइन द बट वेस मेंटर जो टेलीग्राम चैनल अछि सेटे जॉइन करतो देन यू विल गेट द PDF I will share in the group. Okay, thank you everyone and have a good day to all. See you in evening session also.